Now, what if I want to give bonus as per the department? ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो क्या करेगा? As per the department, we need to give bonus. So bonus varies from department to department, right? If the employee is from the A department, then we are going to give him 10% or 10 or 20 or 30 or 40. इसको कैसे सॉल्व करोगे आप? दो मेथड है. Method number 1 is using nested if. That is called many if statements, right? अगर मैं आपसे कहूं कि A डिपार्टमेंट वाले को 10 देने का है, तो फिर डेफिनेटली आई विल से दैट इफ दिस मैन is from A, then give 10, right? Yes. तो ये हो जाता है 10. And if I drag it, I'll get false, 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 false. बाकी लोगों को 10 आ जाए. So those who are in department A, they are going to get 10. But what if he is in B? Then he should get 20. C is 30. तो ऐसा करना रहेगा ना. You'll have to use one more if then. आपने यहाँ पे बंद कर दिया ना ब्रैकेट बंद नहीं करने का. Instead of closing the bracket, you put a comma and you start your if again. इसको भूल जाओ, पहले वाले को भूल जाओ. You start again. That if it is not A, means if now this one, same cell, if this is B, then what you want him to do? Then what? Then 20. Again, comma. What if this is C? Then what you want? I want 30. Okay. What if this is D? Then I want 40. Now, else, I don't want to give anyone to anything. Last May, आपको, you have to close all the brackets. 1, 2, 3, 4. Press enter. Now see what happens when you double click over here. Automatically Excel will check who is from which department. So this one was E and we haven't mentioned anything for E. So this is blank. E department को कुछ नहीं मिला. Is that okay? Understood? Yes, sir. Yes, sir. सब लोग समझ गया? Very good. Now, let's say that my question is, okay, now so let's see, I'm giving a very simple question. I want to give all the employees a fixed bonus, okay, of say 100 or 500, whatever you want to give. The employees department which has less than 5 people, any employees department having less than 5 people in the department, that person will get 500 rupees. Simple question है ये, एकदम simple. If you people have Office 365, then the same thing you can do it using this function. पुराने version में नहीं आई. All of you are having this function? Yes. So if you're using this function, then no need to write if, right? All you need to write is the logical test. And the logical test is this is what, this is A,
then 10, comma, and if this is B, then 20. समझा ना? Now this is C, then 30. ऐसा. And only one. Enter. See, you got the same answer. अब यहाँ पे Na आ गया. अभी क्या करूँ मैं? But here you have an Na, and I don't have any arguments of else, because I just have two arguments, that is called logical test and value. Logical test and value. So I have to deal with this Na part. समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ प्रकाश जी? Yes, sir. Yes, sir. हाँ. So how will I deal this? Because in ifs I don't have anywhere where I can say that if not found then what to do, and I don't have any else statement here. Okay, I just have the logical test. तो अभी क्या करूं मैं इसके लिए फिर मुझे यहाँ पे एक फंक्शन यूज करना पड़ेगा. उस फंक्शन का नाम है is na फंक्शन. ठीक है? is na क्या करता है? It will just check whether कोई सेल के अंदर na है या नहीं. For example, if I type here, I say is na, can you find na over here in I6? तो मुझे बोलेगा true, right? और अगर मैं I6 की जगह पे I5 लेता हूं तो मुझे बोलता है false. तो मुझे बोलता है कि I don't find any not available error in this, so I will just hand over this to इसको if na को. तो कैसे दूं मैं इसको ifs के अंदर? if na आया तो क्या करने का? तो कुछ मत कर दे. So we got rid of all the errors. ठीक है ना? किसी को नहीं समझा? You understood this function, right? Is ifs function? Yes, sir. Okay. अभी जो तुम लोग को दिया हुआ क्यों नहीं हो रहा है तुम लोग से प्रकाश? The one which I gave it to you now, वो क्या था? मैं भूल गया. मैं ये तो सिंपल क्वेश्चन है. सर इसमें हम काउंट इफ यूज कर सकते हैं? नहीं, मेरा क्वेश्चन क्या था मेरे को याद नहीं आ रहा. What did I ask? डिपार्टमेंट में कितने बंदे हैं जिनके yes, मैंने बोला कि इसको 500 रुपया मिलेगा कि अगर क्या इस डिपार्टमेंट में कितने अगर नंबर्स ऑफ एम्प्लॉयज? count if of this. Yes. If the count if of this is less than 5, तो 500 रुपया दे दो भाई. इसमें क्या टेंशन लेने का? Yes. कितना सिंपल सवाल है. तो सर इसको आपने चैट में लिखने को बोला नहीं था, नहीं तो मैं लिख देता. चलो कोई नहीं. किसी को भी नहीं मिल रहा है बिकॉज किधर भी 5 से कम नहीं है, सब 5 से ज्यादा ही है. लेट्स मेक इट लेस देन 8. हाँ, इसको मिल गया डी वाला बंदे को. इट मीन सारे डी वालों को 500 मिलेगा. नाउ अच्छा, one more thing we can do without using if. I want to give this 10, 20, 30, 40. देखो मैं क्या करता हूँ. I'll use VLOOKUP now. ठीक है? VLOOKUP is asking me what you want to look for. I say look for this value. Look for this value. मुझे बोलता है where do you want me to look this value for? I say look it in अच्छा यहाँ पे तो मैंने दिया नहीं ना ABCD. Sorry. This time I'll say look for. किधर गया वो? हाँ, ये तो मेरा VLOOKUP से हो ही जाएगा. ये वाला F2. Yes. ये वैल्यू ढूंढने का किधर पे? अच्छा. लॉक कर दूं उसको. मिल गया तो अपना काम हो गया ना. Why we will write if.
ठीक है ना? तो E was not mentioned. So suppose in future if E comes, then E आया तो क्या होगा? है तो नहीं लेगा, नहीं थोड़ी लेगा उधर बिकॉज तक नहीं होने वाला है, उधर हमें डी तक रे- चाहिए। रेंज नहीं दे रखा। तो क्या करेंगे? रेंज L/M रखेंगे। नहीं, मैं ऐसे भी कर सकता हूँ। How many rows जंपिंग करना है? कॉलम्स ऐसे 2 हाइट तो के बाद डबल कॉमा आना है। डबल कॉमा नहीं, वो भी अपना जो तुमने बोला वो भी करूंगा मैं। क्या है ना, ये तो बेस्ट ही ऑप्शन था, लेकिन मैं आपको इसका बताता हूँ, इसका दूसरा एग्जांपल में बता दूंगा मैं क्या कर रहा हूँ। नहीं तो बेस्ट तो यही था, और भी बेस्ट पता है क्या था? आप इसको सीधा कंट्रोल T कर दो, टेबल में चेंज हो जाएगा। टेबल में चेंज हो गया। If this is table, then whenever there is an increment, automatically this will increase. ठीक है ना? अगर ये टेबल में चेंज हो जाता है, ओके ओके, अपना बोनस पर कंट्रोल T ऐसे, ओके, this becomes my table 2. Now we will write here equals to VLOOKUP. What do you want to look for? Look for this one where क्या है तुम्हारा? ऐसे table 2 बराबर है, यस, कॉमा कॉलम इंडेक्स नंबर क्या है? कॉमा 0। We have कुछ नहीं है, तो let's see. I have देखो ये आ गया, यहाँ पे चेंज होता है ऑटोमेटिकली। If I have someone F या फिर F वाला बंदा ही नहीं है अपने पास, and if you type in future F, this will automatically come. So this is dynamic, change होते जाता है range. Okay, always use tables for dynamic ranges. सर जो NA वाला आया था एरर, वो इस इफ NA वाले में भी सभी रिमूव कर सकते बिल्कुल हैं। बिल्कुल उसी से रिमूव होगा। ओके, अगर मैंने ये निकाल दिया, अब ये NA आया है, तो NA की जगह पे एक और काम करो आप, जस्ट टाइप इफ एरर, बिकॉज NA जो है ना वो सिर्फ NA का एरर ही निकालेगा, बट इफ एरर विल गिव यू एन एरर ऑफ से दिस वाला हैश वैल्यू, ऐसा भी एरर आ सकता है। देन यू हैव हैश टेक्स्ट, ऐसा भी आ सकता है एरर, बहुत सारे एरर आ सकते हैं। तो इस सारे एरर्स को इफ एरर पहचान जाएगा। और अगर फ्यूचर में आ गया एफ तो टेंशन नहीं है अपने को। चलो आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन देता हूं। अब ये क्वेश्चन I'll just go to some other sheet. Okay, I just want to give some ratings over here. ठीक है, you can just see this, ध्यान से देखो ये क्या है। ऐसा टाइप का एक डेटाबेस है where I have the song name, I have the year, I have the music director, I have lyricist and the singers.
ठीक है, आई हैव द मूवी नेम हियर. मुझे ना ऐसे स्टार देना है, स्टार 5 स्टार देना है. ठीक है, किसको? सोनू निगम, सोनू को. और कुमार शानू को. All my songs who have Kumar Sanu have sung the song, give 5 स्टार. अब समझा? अभी देखो यहाँ पे कुमार शानू है, शानू नहीं, शानू. Here I have somewhere. Here also I have Kumar Sanu, Kumar Sanu. दिख रहा है? So many Kumar Sanu. And suppose if I write here, let's say I write here, अलका याग्निक को देने का. चलो अलका याग्निक, मैं जिसका भी नाम लिखूंगा. So अलका, अलका इधर भी है, अलका इधर भी है, अलका किधर भी है, अलका इधर भी है. You're getting me? So any name I type here, any name I type over here, yeah, everybody is there, right? Yes, sir. My question is, I will type here, what I will type here? I will type the name of the singer. If I type Alka, I should get I should get all the songs of Alka 5 star. If I write Sonu, then all the Sonu songs should be 5 star. कौन करके देगा उसको? मैं सच्ची में बोलता हूं, मैं जिसने भी ये करके दिखाया वो दिल्ली में पार्लियामेंट में मैं चिट्ठी भेजूंगा, तुम लोगों को रिकमेंड किया जाएगा और आप लोगों को वहां पे बुलाया जाएगा बकायदा. दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से आपको बुलाया जाएगा. अभी तो 26 जनवरी निकल गई है, ईद, बकरी ईद को बुलाएंगे आप. फेलिसिटी सीरियस है तुम लोग कितना. चलो सीरियस रहो, कोई बात नहीं है, मगर इसको सॉल्व कर सकते हैं क्या? इफ से करना पड़ेगा. अगर यस अगर क्या? अरे क्या बात है प्रकाश, आपने प्रकाश डाल दिया. बोलो प्रकाश. क्या? सर इफ के साथ वाइल्ड वाइल्ड कार्ड्स वाला यूज करेंगे. हो सकता है तो करो. सर सिर्फ अलका या कोई भी हो? अलका किया तो अलका का, और कोई किया तो और किसी का, और किया तो अब मैं यहाँ पे ऐसा लिखूंगा ना, तो सानू. नो, हाउ मेनी ऑफ यू हैव ट्राइड दिस? ट्राई भी किया क्या किसने? ट्राई किया. कुमार शानू, वाह वाह वाह. आता है क्या? ऐसा हो रहा है प्रकाश जी? सर मैं नोटबुक में कर रहा हूँ अभी, एक्सेल वो 365 है नहीं मेरे पास. ठीक है, तो ऐसा नहीं होएगा ये. सो व्हाट विल हैपन, सी. अभी आप क्या बोलते हो उसको कि अगर व्हाट, इफ दिस इज इक्वल्स टू व्हाट? तो मतलब कुमार सानू से स्टार्ट हो रही है. हाउ यू नो कुमार शानू? हाउ यू नो कुमार शानू? मैं ऐसे ही बोलूंगा ना, इफ दिस इज इक्वल टू दिस, तो 1 2 3 4 5, एल्स नथिंग. ठीक है, बट इफ आई टाइप एवरीथिंग, अभी मैंने ऐसा लिख दिया कुमार शानू खाली इधर आके, तो देखो कुमार शानू के सामने आ गया ये. जहां पर भी खाली कुमार शानू रहेगा उधर आ जाएगा, पर कुमार शानू के साथ में कुछ है तो नहीं मिलेगा. तो अपन क्या करेंगे? ठीक है, वही करेगा ना, वही करेगा, राइट. तो क्या करेंगे हम लोग? आई एम लुकिंग फॉर इफ, ये सिंगर्स क्या है, ये वाला कॉलम. इफ दिस इज इक्वल्स टू व्हाट? इफ दिस इज इक्वल टू, अभी काम करो, तुम लोग को ये समझ में नहीं आएगा, इसके लिए हम लोग पहले तो इसको ना, इसको हम लोग ये कर लेते. इधर क्या, टेबल में जाके कन्वर्ट टू रेंज. फिलहाल आई विल रिमूव दिस.
this is simple range, so that I will type here that if this cell is equals to star, right, and this one and star, आप समझा? तो 1 2 3 4 5 or else nothing. You understood this? आगे स्टार, पीछे स्टार, बीच में सेल एड्रेस. रिपीटेशन के लिए है ना सर? ये रिपीटेशन नहीं है, वाइल्ड कार्ड है ये. वाइल्ड अच्छा कार्ड है. मतलब उसी ने मतलब H1 में मैं जो भी लिखूंगा उसके आगे कुछ भी रहेगा तो चलेगा, उसके पीछे कुछ भी रहेगा तो चलेगा. अच्छा If you are using wild card in if, it will not happen. See, मैंने ऊपर ओके सर, हाँ वही इशू हो रहा था मेरे साथ भी. हाँ, because wild card is not accepted in if. Please don't try man. ओके ओके सर दोबारा दिखाना. देखो नॉर्मली वाइल्ड कार्ड किधर यूज होता है बताता हूँ. इफ आई से अभी मुझे यहाँ पे मुझे ना गिनने का है, चलो आई लास्ट यू, कुमार शानू ने कितना गाना गाया है. आई विल टाइप हियर द नेम, ओके, एंड आई वांट टू फाइंड आउट हाउ मेनी सॉन्ग्स कुमार शानू ने गाया है. फाइंड कर सकते हो? आई विल टाइप हियर सानू, आई विल टाइप हियर कुमार, आई विल टाइप हियर एनीथिंग. कुमार सानू भी टाइप कर सकता हूँ. मुझे पता लगाने का है कि अगर मैंने सानू टाइप किया, सानू ने कितना गाना गाया है, हाउ मेनी नंबर ऑफ सॉन्ग्स सानू ने गाया है. हाउ यू गोइंग टू काउंट सानू नाउ? मैं बोलता हूँ इक्वल्स टू काउंट इफ ही करेगा ना. मैं काउंट इफ मुझे बोलता है व्हाट यू वांट टू काउंट, आई से आई वांट टू काउंट दिस वन, करेक्ट, ई टू ई. मुझे बोलता है ठीक है, ई टू ई में व्हाट, तो ऐसे ई टू ई में काउंट दिस वन, यहाँ पे चलेगा, एंड दिस वन एंड दिस वन मीन्स वॉट एवर इज देयर इन H1, उसके पहले आई डोंट माइंड एनीथिंग कमिंग और उसके बाद एनीथिंग कमिंग. एंड इफ आई प्रेस एंटर नाउ यू विल सी दैट सानू हैज संग 13 सॉन्ग्स. इसमें कुमार सानू भी आ गया, सानू भी आ गया. इट विल नॉट मेक एनी. अभी मैं यहाँ पे खाली अलका लिखता हूँ तो ये अलका के गाने 10 हैं. अभी खाली याग्निक लिखूंगा तो भी 10 मिल रहा है, बिकॉज इट इज अलका याग्निक कंसिडर्ड. समझा तुम लोग? यस यस सर. ओके, एंड इफ यू डोंट वांट टू पुट इट ओवर हियर तो मैं ऐसा करूंगा डायरेक्ट, तो भी चलेगा. काउंट ई टू ई में व्हाट यू वांट टू काउंट H1. अब जैसे एंटर मारता हूं तो मुझे 0 आंसर आता है, लेकिन तो फिर आप यहां पे काम करो, ठीक है. हियर यू पुट एस्ट्रिक एंड देन यू अगेन पुट स्टार ओवर हियर, तो वो वैसा उठा रहा है. तो एस्ट्रिक प्लेस द वाइल्ड कार्ड, बट दिस वाइल्ड कार्ड तुमने पूरा उधर मुझे बंद कर दिया. क्या है? कितने नीचे, टेबल के नीचे. इससे पूरा कैसे करूंगा? What is happening, you know? If I have to stop the sharing, now once I start the sharing, I cannot see you people. I don't know why. जब मैं शेयर करता हूँ ना स्क्रीन को एक्सेल का, तो आप लोग गायब हो जाते हो. किसी को पता है हाउ डू आई डू दैट? ओके, आई थिंक आई शुड गो इनटू व्यू. व्यू में जाके देखता हूँ. शेयर जैसे करूंगा ना, गया वो गया. हाइड फ्लोटिंग, हाइड वीडियो पैनल. पहले भी फर्स्ट काम और फिर मुझे वापस से ना जूम चालू करो. I don't know, there has to be some solution for this, but anyway चलो ठीक. यहाँ तक तो ऐसा भी नहीं आ रहा.
ये ऊपर हो गया है मैं चलो एनीवेज तुम लोग को मेरी आवाज आ रही है? Yes, sir. I cannot see you people but it's okay. But now the question is चलो छोटा सा क्वेश्चन था लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है because many people don't know how do you use VLOOKUPs. VLOOKUP में भी मैं कैसे यूज करूंगा? I want to find whatever the name I type over here, right? और जहां पर भी ये मिलता है उसमें मेरे को स्टार चाहिए. So how will I type this? For this you'll have to know some basic functions because यहाँ पे मैं टाइप करने वाला हूँ any particular word and I just want to find out whether this word exists over there or no. मैंने अगर यहाँ पे SUN भी लिखा, SUN means anywhere SUN है क्या? यहाँ पे है, right? So he will consider that. Getting me? Yes. So who is the man? कौन है वो जो ये बताएगा कि this word exists over there? हाँ या? सर क्वेश्चन रिपीट करना. I just want to find whether whatever word I am typing over here, this word, is it there here or no? For example, if I type here equals to, is this over here? So what I will get now? I will get false answer, right? But if I, okay, yeah, sorry, true है because दोनों blank है, right? Okay, but यहाँ पे suppose लिखा हुआ है सानू. Now it's false because यहाँ पे सानू नहीं है. But जैसे मैं यहाँ पे सानू लिखूंगा, तो this becomes true. सानू matches. But if suppose यहाँ पे कुमार शानू लिखा है, then this is becoming false because he actually इसको पूरे को देख रहा है ना ये. Yes, sir. तो कौन है वो जो मुझे ये चेक करके देगा कि क्या ये वर्ड इसके अंदर है या नहीं? कौन है? VLOOKUP है ही नहीं. बंद कर दीजिए आप. नहीं हो? मैच सर, मैच क्या निकाल के देता है? कंटेंट. मैच क्या निकाल के देता है? नंबर. मेरे को आपको नंबर. मैच क्या निकाल के देगा? कंटेंट देता है ना सर. आपको कंटेंट चाहिए क्या? आपको रो नंबर चाहिए? मैच आपको रो नंबर निकाल के देता है. जब वो मैच सर इंडेक्स आपको कंटेंट देता है. मुझे कंटेंट थोड़ी चाहिए. कौन सा कंटेंट चाहिए आपको VLOOKUP का? मुझे क्या ढूंढना है? मुझे सानू ढूंढ के क्या निकालना क्या है? मुझे निकालना कुछ नहीं. मुझे सिर्फ पता लगाना है कि सानू है क्या उसमें. इस टेक्स्ट तो खाली ये पता लगा कि क्या वो टेक्स्ट है या नहीं है. उसमें कंडीशन इफ के अंदर कभी भी वाइल्ड कार्ड्स नहीं चलेगा, ठीक है? बिकॉज इफ विल टेक इट एज अ टेक्स्ट. नाउ सी व्हाट आई एम ट्राइंग टू टीच यू एवरीवन कि दिमाग कैसे चलाने का. सर मैंने आंसर भेजा एक बार देखना. वेरी गुड. बाय हार्ट करने से नहीं होने वाला है. आपको पहले तो ये पता लगाना पड़ेगा कि क्या ये सानू वर्ड इसमें है या नहीं. ये कौन लगा सकता है पता? या तो ये फाइंड लगा सकेगा, फाइंड, या फिर ये फंक्शन होगा सर्च. लुकअप. अरे लुकअप छोड़ो ना भाई. लुकअप मेरे को पता नहीं लगा के देता है कि वो वर्ड है या नहीं. दिस कैन बी फाइंड आउट ओनली बिटवीन दिस टू फंक्शंस, फाइंड और सर्च. फाइंड मतलब ढूंढना, सर्च मतलब खोजना. समझे? दोनों का मतलब कितना डिफरेंट है. देखो, एक ढूंढता है और एक खोजता है. ठीक है, आप पता लगाओ दोनों का फर्क क्या है. एनीवेज, फाइंड और सर्च में कोई फर्क नहीं है. खाली इतना है, थोड़ा केस सेंसिटिव है. इफ आई आस्क फाइंड, find, can you find me say Udit? Can you find Udit? Where? Here. That's all. So find मुझे क्या बोलेगा? Yes or no नहीं बोलेगा. Find will give me the position of Udit. वो कहां पर है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. अब जैसे मैं एंटर मारूंगा, आई थिंक मुझे 14 आंसर आना चाहिए. इधर आया भाई, इधर गड़बड़ है. हाँ, आना चाहिए. ये नहीं आया क्योंकि मैंने फाइंड यूज किया.
अभी अगर मैं यही चीज सर्च को बोलूंगा ना, इक्वल्स टू सर्च, कैन यू सर्च फॉर उदित लिखा है, उदित, ओके, आई सेड उदित को ढूंढना है तेरे को, अभी सर्च को दे रहा हूं मैं यही चीज, अब सर्च मेरे को 14 लाके देगा, लेकिन फाइंड ने मुझे 14 लाके नहीं दिया, क्योंकि फाइंड इज केस सेंसिटिव, तो मुझे फाइंड को एग्जैक्टली वैसा ही देना पड़ेगा जैसा वहां पर है, उदित वहां पे कैसा है, अब फाइंड ने भी मेरे को 14 लाके दिया, आ रहा है समझ में? Yes, sir. ओके, अब इसका करेंगे क्या आपको, व्हाट वी कैन डू विद दिस, याद रखना, इट मींस नंबर आया ना, नंबर आया मतलब ये चीजें हैं, अब यही चीज अगर मैं, सो लेट मी यूज ओनली सर्च बिकॉज सर्च इज अ केस सेंसिटिव नहीं है उसके अंदर, सो आई जस्ट आस्क फॉर सर्च बिकॉज वहां पे कैसा भी रहने दो, ऐसे कैन यू सर्च फॉर दिस वन, आई प्रेस F4, वेयर यू वांट टू सर्च, आई से सर्च ओवर हियर, अभी याद रखना, इट मींस इफ आई प्रेस एंटर एंड इफ आई एम गेटिंग अ नंबर दैट इज अ पोजीशन ऑफ दैट, राइट, इट मींस इट एग्जिस्ट, अभी सानू नहीं है किसमें, बाजू वाले सेल में सानू नहीं, अब ये सर्च को मैं ऐसे भी दे सकता हूं, क्योंकि ये सर्च जो है ना ये डायनामिक लेटेस्ट वाला है, सो आई कैन ऑलवेज आस्क हिम फॉर रेंज, कि सर्च दिस वन इन दिस रेंज एंड आई विल गेट समथिंग लाइक दिस, आ रहा है समझ में? सर्च इज एन ऑफिस 365 का फंक्शन है, इट इज अ डायनामिक एरे फंक्शन है, ये एरे फंक्शन बोलते हैं, एरे फंक्शंस वो होते हैं which can be spilled if the cell cannot contain a single data, and if your query demands for more number of cells to be display your answer, then that function is eligible to expand automatically by itself by spilling the range in Excel. This is the power of dynamic function. समझ में आ रहा है आपको? बहुत सारी चीज समझ में नहीं आएगा, मतलब कभी कभी क्या होता है ना, आपका जो क्वेश्चन रहता है ना वो एक ही सेल में आंसर आ जाता है उसका, लेकिन अगर आप बोलते हो उसको कि कैन यू चेक फॉर समथिंग दिस दिस, तो अभी एक सेल के अंदर वो कैसा बताएगा तुमको सबके बारे में, तुम समझ रहे हो? इफ यू आस्क हिम इज दिस इज मोर देन 10, तो यू गेट एन आंसर, बट व्हाट इफ यू आस्क हिम इज दिस ऑल इज मोर देन 10, नाउ सी दिस इज स्पिल्ड, ये 365 में स्पिल किया उसने, राइट, ये बाकी आप लोग में नहीं होएगा, आप लोग अगर इसको 365 में करोगे ना तो यू गेट एन एरर आंसर, बट यहाँ पे ऑटोमेटिकली स्पिल्ड रेंज हो गया, इट मींस ओनली वन सेल के अंदर फॉर्मूला लिखा हुआ है, बाकी दिस इज ऑल स्पिल्ड रेंज, सो इफ आई राइट हियर 10, क्या लिखा था यहाँ पे, इफ मोर देन 10, इफ आई राइट हियर 50, सी दिस, ये क्या हो गया, ये लोग सब कौन है, कौन, J4 कौन है, हाँ ठीक है, अभी तुम समझो, मैं बता रहा हूँ नाउ, ये क्या किया इसने, आई जस्ट टोल्ड हिम कि इंस्टेड ऑफ सबको देख लेते, सो एक्चुअली एवरीबॉडी इज गिविंग मी दिस इज 7 का मतलब होता है कि यस सानू इज देयर ओवर हियर, इस लाइन के अंदर जो SANU लिखा है ना वो 7th पोजीशन पे आता है इन E, यू कैन जस्ट सी दिस, सो अगेन व्हेन आई कम डाउन हियर आल्सो आई हैव सानू, यहाँ पे 20th पोजीशन पे सानू आ रहा है बिकॉज़ इट्स रिटन ओवर हियर, आपको समझ में आ रहा है सबको? Yes, sir. सच्ची बोलो यस सर, जोर से आवाज आना चाहिए, मेरे को दिख Yes, नहीं रहा है sir. कोई भी, यस सर, Yes, sir. दिस विल रियली हेल्प यू आउट, याद रखना, दैट इज कॉल्ड फाइंडिंग इन, आपको एनीवन गॉट द आंसर व्हाट वी वांट, देखो नहीं मिला ना अभी तक आंसर, देखो यहाँ पे देखो अभी आप, ओके नाउ सी व्हाट वी विल डू, यहाँ पे मुझे वैल्यू आ रहा है ना, आई हैव वन मोर फंक्शन, आई डोंट वांट दिस वैल्यूज, बिकॉज इफ क्या करता है, आपको आखिर में इफ को देने का है ना, इफ क्या बोलता है, इफ बोलता है तुम मुझे लॉजिकल टेस्ट जो दे रहे हो ना, दैट हैज टू बी ओनली इन ट्रू एंड फॉल्स, द लॉजिकल टेस्ट इज ओनली इन ट्रू एंड फॉल्स, बिकॉज इफ इट इज ट्रू देन इट विल डू दिस, सो अगर आप बोलते हो कि इस ये जो है H1 या फिर दिस वन इज इक्वल टू दिस, इज जो भी तुम बोलते हो, दिस इज इक्वल टू दिस, तो वो चेक करेगा यस और नो, तो यहाँ पे आंसर आएगा, यहाँ पे क्या था, सॉरी मैंने क्या लिया, इक्वल्स टू इफ ब्रैकेट ओपन E2 इज इक्वल्स टू दिस, यस और नो, तो मुझे आंसर आता है फॉल्स, फॉल्स आएगा तो इट विल कम हियर, सो नाउ आई वांट
ट्रू एंड फॉल्स का आंसर, सो आई हैव टू पुट दिस, आई डोंट वांट दिस वैल्यू 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 वैल्यू, तो मुझे सिर्फ ट्रू एंड फॉल्स चाहिए, यहाँ पे सब जगह पे ट्रू एंड फॉल्स चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, I will use a function called isNumber. You know the function isNumber? isText isNumber. They will just check whether the following cell is number or no. अगर मैंने इस नंबर को बुलाया और मैंने बोला इस नंबर कैन यू चेक whether this is number or no, तो मुझे वो आंसर आता है false. So instead of true, is number false बोल रहा है. And if I start dragging this, you will see यहाँ पे true आ गया और इस नंबर बोलता है yes I got the number over here. Correct? Yes or no? Yes, sir. yes yes Okay. So what I will do, मैं अभी इसको पूरे को इस नंबर के हवाले कर देता हूं और मैं बोलता हूं इस नंबर कैन यू डू वन थिंग फॉर मी, ये पूरा जो तेरे को दे रहा है क्या ये नंबर रिटर्न कर रहा है, क्या सर्च फंक्शन इज रिटर्निंग यू एनी नंबर, तो मुझे बोलता है ये सर्च फंक्शन तो खुद डायनामिक एरे, उसने सबको बना दिया। इट मींस जहां पर ट्रू है वहां पर ये बंदा है, सिंपल, राइट और रॉन्ग? Yes, sir. Right. जहां पर Right. ये बंदा क्या, मैं अगर इसको लिखूं ना, कानू की जगह पे अनु लिखूं ना, False हो जाए। कि अभी यहाँ पे अगर अन्नू मलिक होगा ना तो वो भी आ जाएगा, Hmm. तो अन्नू, अब यहाँ पे कौन आया अन्नू या इस कुमार सानू, तो भी आ गया वो। सो आई कैन राइट एनीथिंग, आई कैन राइट इन एनी फॉर्मेट हियर। अभी इसका मतलब ये होता है कि अब मेरे को ये पूरे को, इन सब को मुझे देना पड़ेगा इफ को, बिकॉज इफ बोलते ट्रू एंड फॉल्स, तो मैं इफ को बोलता हूँ ये सारे लोग ने तेरे को जो भी दिया है, अगर इसने तेरे को ट्रू दिया ना तो उसको मेरे को 5 स्टार तेरे को देने का है, नहीं तो उस बंदे को कुछ मत दे। दैट्स ऑल। नाउ सी व्हाट हैपेंस। नाउ इफ आई राइट हियर अलका, you will see only अलका याग्निक के गाने को ही 5 स्टार्स आया हुआ है। You write here Sonu, so only Sonu. So this becomes very dynamic way of searching the things. You can use this in everywhere. I can use this in my validations में use कर सकता हूँ मैं ये, but आपको समझ के करने का, don't by heart the things, where the things are used. I can use this in filters also. अभी सेम चीज अगर मैंने बोला कि ऑल द लव सॉन्ग्स, जिस गाने के अंदर लव आता है, तो मैं क्या बोलूंगा, इक्वल्स टू इफ ब्रैकेट ओपन इस नंबर आता है, सर्च का वैल्यू मुझे बोलता है व्हाट टू सर्च फॉर, ऐसे ऐसे सर्च फॉर लव वेयर इन ए में है नाम गाना, तो ऐसे ए टू ए, एंड इफ इट इज देयर देन give just say love, else no. फिल नहीं हुआ, क्या किया अपन ने, if is number okay, search for love within text, हाँ इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, इसका नहीं आना, कौन सा 360 का नहीं है, सर्च फंक्शन यूज कम करेगा फिर बिना 360, मेरा भी टेबल नहीं, नहीं इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। इफ इस नंबर ब्रैकेट ओपन वैल्यू क्या है, सर्च फॉर लव फाइंड टेक्स्ट ए टू ए, ए टू ए नहीं भैया, ओके आई हैव टू सर्च फॉर यहां से लेकर ठीक है, जिसने भी गाना है। अच्छा सबसे बड़ा फायदा देखो VLOOKUP का भी क्या होगा, आई विल टेल यू वन थिंग, अभी देखो बेस्ट ऑप्शन, आई वांट टू फाइंड द मूवी, मैं यहाँ पे सॉन्ग लिखता हूँ, आई विल टाइप द सॉन्ग हियर एंड आई वांट द मूवी हियर। देखो क्वेश्चन देखो, मैं यहाँ पे सॉन्ग टाइप करूंगा, आई डोंट रिमेंबर द सॉन्ग, अब यहाँ पे मैं बोलता हूँ उसको, अब यहाँ पे VLOOKUP, मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, मूवी चाहिए, बराबर है, सॉन्ग क्या है, सॉन्ग है चूड़ियां, बोले चूड़ियां, बोले चूड़ियां, या फिर मैं बोलता हूँ एक गाना है मिस्टर लोवा लोवा, तो ऐसे लोवा, इफ आई राइट लोवा, अभी किधर है लोवा, किधर तो रहेगा, आई जस्ट ट्राई टू फाइंड दिस लोवा,
Here it is, Mr. Loa Loa तेरी आंखों का जादू. This is from the movie इश्क. इश्क. तो मैंने सिर्फ वहां पे लोआ लिखा, तो I should get the movie इश्क. This is homework for you all. ठीक है, अब मैं सॉल्व करूंगा, आगे का टॉपिक रह जाएगा. भाई मुझे को गाना थोड़ा सा याद है. I can write any song over here. I will write here क्या लिखूंगा मैं? चॉकलेट लाइम जूस. या एनीथिंग. आई विल राइट हियर वंदे मातरम. और वंदे मातरम वहां पे लिखूंगा मैं, तो वो चेक करेगा वंदे मातरम किधर गया. I press control F. वंदे, ये रहा. If I type for वंदे मातरम, I should get the movie name this one, वंदे मातरम. जो भी गाना टाइप करता हूँ यहाँ पे टाइप करता हूँ, खाली चोरी लिखूंगा, चोरी मेरा काम, तो मेरे को बोलेगा रूप की रानी चोरों का राजा. ये पिक्चर है. So anyways, so this is your homework. How do you use? How will I find the movie name here? मुझे यहाँ पे मूवी का नाम चाहिए. What do I find now? What do I do here? सर ये फाइल्स भी दे दो प्रैक्टिस के लिए. अरे आपको पता है क्या करना है कि आपको सिर्फ इधर ऐसा सॉन्ग लिखो और एक काम करो और यहाँ पे मूवी लिखो, बस प्रैक्टिस करने के लिए बोल रहा हूँ. ओके. सॉन्ग में लिखो तू मेरा राजा, ऐसा. दूसरा, दिल ही तो है, ऐसा. पिक्चर नाम ऐसा, मेरा दिल तेरे लिए, ऐसा. 3, बस 3 काफी हो गया. कौन सा पिक्चर है यहाँ पे? एबीसीडी पिक्चर डाल दो. एंड नाउ इफ आई टाइप द सॉन्ग हियर, आई शुड गेट द मूवी. सो इफ आई टाइप हियर मेरा राजा, इतना भी टाइप करूंगा मैं, तो मुझे बोलेगा मूवी ए है. तो यू जस्ट टाइप. इट्स ओके. फॉर प्रैक्टिसिंग यू कैन डू. स्मॉल डेटा पे भी काम हो जाएगा. Once you understand, then you can implement in your real data, right? So ये भी lookup से कर सकते हो. We finish with this. Let's start with filters and advanced filters. खत्म करते हैं. सर एक बार देख लो, आंसर भेजा मैंने उसका. Very good, आपने किया ना? Okay, very good. lookup आपने किया. Okay. ऐसे चलना चाहिए. क्या किया हम लोग ने? ऐसे equals to lookup. What do you want to look for? ऐसे look for this one, comma this song. What am I mentioning over here? तो कॉमा नहीं एंड आएगा ना, %. एंड ही डाला ना मैंने. अच्छा सॉरी, इधर नहीं डाला. दिस इज एंड एंड आस्किंग मी टेबल एरे फ्रॉम ए टू एफ आ गया. कहाँ पे ढूंढना है? वो ए से लेकर एफ तक. एफ ले लेता हूँ मैं. एंड विच वन यू वांट? ए बी सी डी एफ 6 1, करेक्ट? ओके. सो इफ आई टाइप हियर लोवा, I got this issue. ठीक है. I type here one day, I say it's the movie Vande Mataram. So wildcards are used over. If के अंदर नहीं डाल सकता हूँ मैं. So we'll start with a new function. Let's go for filters. सर एक बताना, स्लाइसर्स हो गया था हमारा? अभी कहाँ हुआ है? पिवट्स बाकी है. ओके. फाइन. सो फिल्टर्स पे चलते हैं. फिल्टर्स का मतलब तो आप लोग जानते ही हैं, सब लोगों को पता ही होगा फिल्टर्स क्या होता है. कितने जनों को फिल्टर्स नहीं पता? पता है, पता है. ओके. सबसे पहले तो नॉर्मल फिल्टर्स लगाते हैं. आई जस्ट प्रेस कंट्रोल शिफ्ट एंड एल, ऑटोमेटिक यहाँ पे फिल्टर्स लग गए. ठीक है. तो मैं जैसे यहाँ पे क्लिक करता हूँ, अब यहाँ पे मैं बोलता हूँ आई वांट टू फिल्टर बाय. अब देखो, अभी सिर्फ प्रॉब्लम यही होगा. वापस से फिर से टेक्स्ट फिल्टर्स में जाता हूँ. आई से आई वांट टू फिल्टर ओनली बाय जावेद अख्तर. ओके. ये सब जावेद अख्तर के गाने आ गए. लेकिन अगर मुझे यहाँ पे चाहिए कि आई वांट टू फिल्टर बाय एनीथिंग, देखो जिसको फिल्टर आता है वो अच्छा है, जिसको नहीं आता है वो एक बार देख ले. कि वंस यू प्रेस कंट्रोल शिफ्ट एंड एल, or I can go to data and I can go to filters. Once you put the filter, you will get the filter on top so that you can always remove all the records which you are looking for, right? तो अभी यहाँ पे तो थोड़ा सा अलग है. Let's come to the other file, this one, and I will share this file again with you all. This one. Okay. So I press control shift and L, and now I say I just want the people
from India only, so you just click on India. I say okay, you get Indian peoples over here. ऐसे करके मैं निकाल सकता हूँ. ऐसे इंडिया के डॉक्टर्स चाहिए, इंडिया के CS चाहिए, so one filter. Again I'll put one more filter. I say manager. These are all the basic things that we always do that. लास्ट में फिल्टर निकालना है. Again I press Control Shift and L. ठीक है ना? इतना सबको आता है? Yes sir. Yes sir. Let's do some good advanced things. Okay, ये आ गया. अभी मुझे इसमें प्रॉब्लम क्या आ रही है? एक तो प्रॉब्लम ये आ रही है मुझे कि let's say कि I just want a report. तो say for example अगर मेरा फिल्टर के अंदर here I have I say total sales. I have total sales, then I have total numbers. ठीक है, minimum sales ये सब मुझे चाहिए, maximum sales ऐसा सब चाहिए. So what will I do here? I just want the report over here like this. ठीक है. So I will take the I say equals to sum bracket open. Always and always do that. Your table इसको table बना देने का सबसे पहला तो always. You table नहीं बनाओगे तो always you have to go for the range. How to make the table? It's always very good that you should always keep a table. मैंने आपको बताया था table क्यों बनाने का. कुछ ऐड करेंगे तो वो अपडेट होता रहे. बहुत सारी चीजें आती है टेबल्स के अंदर. एक तो सबसे बड़ा बात तो ये तो डायनामिक हो जाता है, और दूसरी बात आपको नाम याद रखने की जरूरत नहीं है. इफ आई जस्ट हाँ, वो ऑटोमेटिकली नेम भी उसका आ जाता है. एग्जांपल ले लो, आई प्रेस कंट्रोल टी, ऑटोमेटिकली मुझे पूछता है दिस इज द टेबल. आई से यस. अब ये टेबल बन गया टेबल 3. इसका फायदा ये है कि सपोज मुझे अभी यहाँ पे टोटल चाहिए, या इफ आई वांट टू टेक द टोटल एनीवेयर, तो ऐसे इक्वल्स टू सम ब्रैकेट ओपन, उसके बाद टेबल का नाम आएगा. ऐसे TAB अपने आप बोलता है मुझे विच टेबल. ऐसे 3 टेबल का कौन सा वाला. यू हैव टू जस्ट ओपन द बॉक्स ब्रैकेट. जैसे ही मैं बॉक्स ब्रैकेट ओपन करता हूँ, यू विल सी टेबल 3 का सारे रिकॉर्ड्स आ गए. ओके, एंड आई विल टाइप हियर sales. I press tab, I close the box bracket and I close this bracket and I press enter. आ रहा है समझ में? I don't need to remember the range. तो ये पूरा नेम रेंज का भी काम कर दिया मेरा इसने, और डायनामिक हो गया. मतलब फॉर एग्जांपल अगर अभी और भी रिकॉर्ड्स अगर बढ़ गए तो मेरे को किधर भी रेंज में वापस मेंशन करने की जरूरत नहीं. सो व्हाट आई विल डू नाउ, आई से इक्वल्स टू सम ब्रैकेट ओपन. मुझे बोलता है किसका सम चाहिए तुमको, तो आई से दिस टेबल, दिस वन. सो टेबल 3 का सेल्स. आई प्रेस एंटर. सो यू गॉट दिस. And if I just drag this over here, you just see this. Instead of sum, I will use now count. And here minimum sales. Again, I will type here minimum. And maximum sales is MAX. मतलब अच्छा कोई है ही नहीं क्या, क्यों ऐसा? लोकेशन में लेके गया. Okay, because that is not locked. ये डेट ले रहा है. It has to be sales. Sorry. Even this has to be sales. ठीक है ना. ओके, ये डाल दिया. बट नाउ द प्रॉब्लम इज इफ आई फिल्टर दिस, क्या होगा. फिल्टर तो हो गया, बट यू कैन सी दिस रिपोर्ट ऑन टॉप. एनीबडी कैन आंसर मी प्लीज फास्ट. एम आई ऑडिबल टू यू ऑल? यस. तो आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? यस सर. या दिस रिपोर्ट इज नॉट चेंजिंग, इट्स नॉट डायनामिक. क्यों बताइए यार. कुछ सीक्वेंस करके कुछ है क्या? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं. Because it's टोटल मारना है. टेबल में नहीं है. देखो टोटल करना है तो सम ही काम करेगा. मुझे यहाँ पे टोटल गिनना है तो काउंट ही काम करेगा. बट यहाँ पर ऑल दिस फंक्शंस विल नॉट वर्क इन फिल्टर. सम, मिनिमम, मैक्सिमम, एवरेज, ये सब काउंट, ये सब काउंट है, ये कोई काम नहीं करने वाला है. बिकॉज यहाँ पर आपने क्या बोला, आपने बोला कि ये टेबल का सेल्स, और सेल्स का रेंज क्या है. सेल्स इज स्टार्टिंग फ्रॉम हियर एंड इट इज गेटिंग एंड ओवर देयर. तो अगर आपने ऐसा बोलते यू नो सम ब्रैकेट ओपन, यू से फ्रॉम दिस टू दिस, H6 टू, तो ये सम क्या करता है मालूम है, ये पूरा तुम्हारा सब टोटल मारेगा ये. सो एंड व्हेन यू फिल्टर दिस, when you filter from China, so all the hidden rows, so some functions will never bother whether it is hidden or not. ये सब functions आपके काम के नहीं है. ठीक है ना सर, सब टोटल काम करेगा. yes, तभी अपने को सब टोटल काम करेगा, और एग्रीगेट भी काम कर सकता है. चलो press this control shift and L. तो यहाँ पे अपन को ये functions काम नहीं आएंगे. so I'll teach you a new function called subtotal. सब टोटल भी आप काम कर सकते हो ऐसे. सब टोटल is the one function.
is only the single function which will call all my functions. So if I type this and if I press enter, what happens? All well. Subtotal main function is this one. I bracket open is asking me which function you want to call. I want to call my sum, and sum is actually sitting in the 9th number. So I say call sum. मुझे बोलता है कि what is the reference? So I say again reference is my table column का sales. Is that correct? Yes. Okay. So now we got this one. Again I will say equals to subtotal. This time I am calling. Sorry, it's a substitute subtotal. मैं इस बार count को बुला रहा हूँ. तो I say its count is on second number. So comma मुझे बोलता है कौन? I say table का. Again, I press Control C. I come here. I press Enter. And this time, instead of 2, let us call function number. कौन सा आएगा? Minimum. Minimum is 5. 5. Right. Again, maximum is 4. Yeah. 4 है क्या? हाँ sir. Change this to 4. And now this becomes like this. We have 3 records. The minimum sales of China, the maximum sales of China, and so on. ठीक है? Yes, sir. Okay. Now let's say how do I? ये तो हो गया, चलो ठीक है. What do I do to pull the data out? Suppose I press Control Shift L. ये मेरा टेबल का एक फायदा है. I can have my total row का column. I can have the header row. I can have the banded row. ये सब टेबल रहेगा तो फायदा होगा. देखो अभी टेबल के अंदर मेरा फायदा ये है कि टेबल डिजाइन के अंदर जाके बोलता टोटल रो. तो I get one row here. तो मुझे यहाँ पे क्या करना है? I just need to come here and I say do one thing. Get me the average of the sales and count. ये काम करो, इसका टोटल मार दो. Take the total and here इसको क्या करूँ मैं? I don't. अच्छा more functions में जाता हूँ and I click on count A आ रहे क्या? Search for the function. I don't know whether I have count A. Okay, I just use count value. यहाँ से देना पड़ेगा, वो सब देखता हूँ मैं. बाद में देख लो आप. यहाँ से अभी रेडीमेड फंक्शन यही है. बाकी आप अंदर जाके वो दूसरा फंक्शन भी ले सकते हो. इतना कोई भी वर्जन में मिलेगा. वंस यू एक बार टेबल में कन्वर्ट हो जाएगा तो ये मिलेगा. सो आई कैन हैव इसका टोटल ले लिया, देन इसका अगर नंबर्स हैं डिफरेंट तो आई कैन जस्ट हैव द काउंट ऑफ दिस, आई कैन हैव द एवरेज ऑफ दिस. ऐसे करके मैं दे सकता हूँ. ये काउंट किया तो काउंट आ गया. मिनिमम कितना है, इतना है. मैक्सिमम कितना है, इतना है. सो आई कैन गेट ऑल दिस फिगर्स ओवर हियर डायरेक्टली. बहुत और भी फायदे हैं इसके. now let's say how do I pull the data out. इसको मुझे इसमें से डेटा को पुल करना है. तो पुल करने के लिए 2 तरीके हैं. एक तो मेरे पास में डायरेक्टली फिल्टर फंक्शन है. ओके या तो मैं, लेकिन ऑफिस 365 है तो ही आपको कर सकते हो. लेकिन अगर ऑफिस 365 नहीं है आपके पास तो when you go to data you will have one more advanced over here. आप लोग ये यूज करते हो कभी? Any of you? Never, sir. नहीं sir. This is very important. This advanced filter is used to pull the data out. That is called extracting the data from the actual database and taking it to somewhere else. Suppose अगर मैं बोलूं आपको इसमें से मुझे डेटा निकाल के बाहर चाहिए in sheet number 3 or anywhere, suppose over here. तो usually what people do, they come here, they here, ऐसे करके ऐसे करेगा, फिर यहाँ जाता है, फिर इतना करके इधर से इंडिया लिया, ओके किया, फिर इन सबको सिलेक्ट किया, इधर करके कंट्रोल सी मारा, है ना, एंड देन यहाँ जाके इसको पेस्ट कर. तो यहाँ पे इंडिया के बंदे आ गए. सो ऑल दिस कॉर्पोरेट वाले बंदे ऐसे काम करते हैं. समटाइम्स ये थोड़ा सा डिस्ट्रक्टिव मेथड हो सकता है. डिस्ट्रक्टिव बिकॉज व्हेन यू डू समथिंग वेरी फास्ट एनी टाइम हो सकता है आपका डेटा किधर तो गड़बड़ हो गया या लॉस हो गया. तो बेस्ट वे इज हाउ डू आई पुल द डेटा वेरी डायनामिकली विदाउट डिस्टर्बिंग माय एक्चुअल डेटा. ओके लेट्स सी हाउ टू डू दैट. ऑल यू डू हैव टू डू इज, एक तो पहला तो उसमें से मैं कंट्रोल शिफ्ट और एल आई विल रिमूव माय filters because I don't need to filter it anymore at this place now. मुझे filter बाहर करना है. So what I will do, थोड़ा zoom out करता हूँ because I don't want to see the actual data.
I'll go to data, I go to filters, I go to advanced filters, and in the advanced filters, I have two options over here. The very first one says that do you want to filter the list in the place right now? I said no, I want to filter it to some other location because already I am filtering at the same place. तो मुझे अभी इसको यहाँ पे नहीं करना है, I want to take it somewhere else. तो इसमें से दोनों में से आपको ये चुनना है that I want to copy my data from this part to some other part. Okay, then he's asking me, okay, please provide me your complete data area. So I say my data area is starting from A5 and it's getting over somewhere over here. अगर ये टेबल होएगा, अच्छा टेबल ही है वो, nice, it's table. तो टेबल आ गया तो बेस्ट है because in future suppose if more additions तो और अच्छा है. So I will remove this total rows. It's already table. So I go to data. This time I go to advanced filters. I say copy it, and asking me what? So I say it's a table. So I can use my table all, the all fields of table. Okay, fine. Now it's asking me, ये तो तुमने बोल दिया all fields of your table. What is the criteria? Criteria का मतलब होता है कि from this entire table, what you want me to, इसमें से कौन से records बाहर निकालने हैं? Which records you want me to pull out? Now here he's asking me for the range, and whenever he asks you for the range, please याद रखना, range का मतलब होता है more than one cell. If he asks you for the cell reference, then you have to type only one cell address. If he's asking you for the cell range, then it's always it has to be more than one number of cells. And if it is asking me for any absolute value, then it has to be a value. You cannot write a range or a cell. So always you see the arguments first. कभी भी है ना functions भी open करते हो ना, arguments देखने का. ये मुझे बोलता है criteria range. Now criteria range here in advanced filter, it should be minimum of 2 cells, maximum मैं 3-4 में डाल सकता हूँ. Minimum of 2 cells. How it works, I'll tell you. He's asking me what is the range. I have to select any 2 vertical cells like J1, J2, K1, K2. ये भी दे सकता हूँ मैं. J5, J6. आ रहा है समझ में? Any 2 vertical. प्लीज ध्यान से सुनना. मुझे आप लोग कोई दिखाई नहीं दे रहे हो. मुझे पता नहीं आप लोग हो भी कि नहीं. हो ना? Yes, sir. Because my screen is actually overlapped on your video. ठीक है. तो 2 सेल देने हैं. आप सोचोगे सर 2 सेल क्यों देने हैं? बता रहा हूँ. 2 ही सेल दे सकते हो आप. ऊपर नीचे वो भी. I cannot write this way. I have to write this way. It means the upper cell will always contain the title. Title means the field name, and the below one will always contain the condition what you want from that field name. So I say that this is my criteria. Okay, he's asking me where you want me to copy this. So I say copy. It's copied over here. अब जैसे मैं उसको okay करूंगा ना, what he will do? He will go and check in my J5 and J6. वहाँ पे क्या लिखा हुआ है? Is there any criteria mentioned over there? And he will not find any criteria mentioned. So he will pull my entire database and he will extract it and put it over here as it is. ये पूरा उठा दिया उसने क्योंकि तुम्हारा J5 J6 में कुछ था ही नहीं. Any of you still want me to make you understand? No, sir. इतना तक समझ आया? Understood. Okay, so I will just remove this part again. And now I will again, before I click on this advanced, you need to make sure that you should have the field name typed inside. Okay, so if I type your location, it has to be the same name. याद रखना है आपको. ये location के आगे space भी अगर आपने डाल दिया ना, तो it will match this one to this one and it will not give you the result. Many people do the mistake over here. अभी मैंने location यहाँ पे डाला और इसके नीचे क्या लिखूंगा मैं? I will type here Italy. And this Italy should be same name as it is mentioned over here. अब मैं क्या करता हूँ? I'll go to my advanced here. सर उसमें केस सेंसिटिव है क्या? No, बिल्कुल नहीं. Okay. Okay, मैंने इटली लिखा और मैं बोलता हूँ copy to another location. Okay, this is my range. That's fine from A2, but it should take me to the table. Table ले नहीं रहा है वो. table लेना चाहिए ना अपने को. Table लेगा तो आगे problem नहीं आएगा. Yeah, it's table hash all. Okay, criteria range. Okay, criteria range again. I will take it from this two and copy it over here. And now if I click OK, you will see it had pulled me only and only Italy का records. आ रहा है समझ में? But if I change to Italy from say India, nothing will happen. समझ में आया? It's not dynamic. समझ में आ रहा है कि नहीं सबको? Yes, sir. Yes, sir. Okay, dynamic अगर करना, हाँ बोलो. मल्टीपल क्राइटेरिया भी दे सकते हैं. मल्टीपल क्राइटेरिया बिल्कुल दे सकते हैं. अभी मल्टीपल क्राइटेरिया देने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा ना? एक काम कर सकता हूँ. I can just do one thing. I will just take everything till here.
ये भी ले लूंगा, चलो ठीक है। आई जस्ट कॉपी इट ओवर हियर एंड पेस्ट इट ओवर हियर। नाउ यू हैव द लिबर्टी, यू हैव द फ्रीडम, आप इतना जो भी क्राइटेरिया देने का दे दो उसको। ओके, सो लेट्स स्टे दैट I come here, I go to advanced filters, and this time copy to my this. सर पुराना डेटा हर बार डिलीट करना पड़ेगा या? नहीं चलेगा ना, वो ऊपर ओवरराइट कर देगा, मैं तो आपको सिखाने के लिए कर रहा हूँ। ओके, क्राइटेरिया रेंज इज दिस टाइम फ्रॉम ईयर टू ईयर, ठीक है, एंड आई से कॉपी टू ईयर। ओह बट आई डोंट हैव, मेरे पास है नहीं ना, प्रोडक्ट लिखना पड़ेगा, नहीं तो कुछ आएगा नहीं ना। सो इफ आई हैव टू राइट इट ईयर दैट आई वांट इंडिया एंड आल्सो आई वांट द पोस्ट शुड बी मैनेजर, और आई से आई वांट इंडिया का प्रोडक्ट सोल्ड पेंसिल, ओनली इंडिया का पेंसिल बता, दो ही है ना, ये दो कंडीशन है। यस सर। अब ये हो गया, अब मैं यहाँ पे जाता हूँ, मैं बोलता हूँ कॉपी टू, ये सब हो गया, मैं ये दे दिया, मैंने इसको बोल दिया भैया ये यहाँ से लेकर यहाँ तक है। ओके, प्रैक्टिस डेटा ये क्या है भाई, ये मेरा टेबल ऑल है, सो ऐसे टेबल ब्रैकेट ओपन हैश ऑल ब्रैकेट क्लोज एंड कॉपी टू, टेबल नहीं है, टेबल 3 था ना अपना नाम, सॉरी टेबल 3, आई हैव टू अगेन याद नहीं आ रहा मुझे नाम, या इट्स टेबल 3 का। ओके, एंड कॉपी टू, यू कैन ऑलवेज यूज वन पर्टिकुलर थिंग ऐसे। ओके, अभी आपने देखा इंडिया का पेंसिल आ गया, ठीक है। अभी अगर तुमको ऐसा चाहिए रहेगा तो सर मेरे को है ना इंडिया का पेंसिल नहीं चाहिए, मुझे इंडिया और लंदन चाहिए, आई वांट इंडिया इन लंदन। याद रखना, इन एडवांस फिल्टर्स एनीथिंग इफ यू राइट अक्रॉस, आजू बाजू, it becomes and, it becomes and anything if you write this way vertically, so it becomes or. समझ में आ रहा है आपको, आपको समझा? So if I write here India London, it means that this becomes or condition. अगर मैंने लिखा, देखो अभी इसको मैं फटाक से बता देता हूँ, अभी आपको मैंने यहाँ सब कुछ ऐसे लिख देता हूँ मैं, and just my criteria need to be changed because it is looking here something like this, and copy to here. क्या किया मैंने, कुछ किया नहीं क्या, क्या हुआ? इंडिया लंदन। मैंने किस कुछ तो कुछ देखा नहीं है। लेट मी चेक इट अगेन, एडवांस्ड कॉपी टू, ये क्या है, इट्स टेबल 3, criteria is correct, copy to, बराबर है ना, इंडिया लंदन है। अगर मैंने ऐसा लिखा ना, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है ऑल द रिकॉर्ड्स ऑफ लंदन का प्रोडक्ट पेंसिल बट इंडिया का सारे रिकॉर्ड्स, ऑल इंडियंस बट लंदन वाले ओनली विद पेंसिल्स, राइट? इफ आई टाइप दिस then here this become this and this become this, आप कॉम्बिनेशन देख लो, हाँ देगा, कुछ तो देगा, देखो आप इसका मतलब क्या हुआ। सर लंदन का भी ए का दिखा रहा है, लंदन का सभी का दिखाएगा मतलब? लंदन का, लंदन का खाली पेंसिल, लंदन का पेंसिल ही रहेगा, लेकिन डिपार्टमेंट कुछ भी रहेगा उसका। ओके, लेकिन इंडिया का सिर्फ ए रहेगा, लेकिन प्रोडक्ट कुछ भी रहेगा उसका। That you see, this is means or this becomes and, ये and में आ गया दोनों। यस सर। Okay, now the thing is कि सर लेकिन अगर मेरा सपोज यहाँ पे if my product is क्या, शुगर, एप्पल, शुगर है, शुगर चलो, या एप्पल है, एप्पल। ओके, अब क्या आएगा, सर एप्पल है ही नहीं तो, है ना एप्पल, इसने एप्पल भी बेचा है, अभी क्या करेगा तुम? इसने इधर एप्पल भी बेचा है, इसने पेंसिल के साथ में मिल्क भी बेचा है, और इसने एप्पल भी बेचा है, सो आई हैव 2 रिकॉर्ड्स ऑफ एप्पल। अब ये कैसे लाएगा भाई, कहां पे करोगे आप?
यहाँ पे तो यूजर एप्पल ही लिखने वाला है, यहाँ पे थोड़ी आदमी बैठ के मैं यहाँ पे क्या ऐसा लिखूँ ना। सिंपल है, वाइल्ड कार्ड चलता है, इसमें चलेगा, वाइल्ड कार्ड आराम से चलेगा। See what will happen now if I just, you have to write in this way then. आपको ये बोलना पड़ेगा ऐसा, स्टार एप्पल स्टार, समझा? एप्पल के साथ मस्त स्टार लगाने का। ओके, एंड नाउ लेट्स सी। अच्छा, गो टू एडवांस फिल्टर्स। अरे मुझे वो कॉपी करके रखना चाहिए था इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। टेबल 3 what is my criteria? Criteria is this time. Copy it over here. You got this 2 products of Apple, right? Sold by this 2%. लेकिन ये कौन लिख के बैठेगा ऐसा? हाँ, तो क्या करने का? कुछ नहीं करने का, उल्लू बनाने का उसको, और क्या करने का? I will write only Apple over here, but somewhere over here I will write equals to asterisk and this and asterisk, right? तो यहाँ पे एप्पल आ गया और इसको छुपा देते हैं आपको, कंट्रोल 1, दिस इज कॉल्ड R1, इसको छुपा देने का। Go to custom and just say 3 times semicolon so that this is hidden here, there is nothing over here. Okay, and now I will come here, I say advanced, copy to, this time it's table all. Criteria is R1 प्रोडक्ट to, अरे वो लिखा नहीं ना उधर मैंने, सॉरी, R1 में लिखा है ना, I'll come and write here, और यहाँ पे I will write product. It has to be the same name. Again दोनों को सिलेक्ट करके मुझे ये हटा देना पड़ेगा। Okay. No colors please. Data, advanced, copy. क्या नाम था? ऑल Criteria range is R1 to R2, ठीक है ना? सर R5 है शायद, सॉरी, ओ हाँ यार, R5 करेक्ट, मैं R1 में टाइप ही नहीं कर रहा हूँ। ओ, it's R5, it's R5 R6 है, बराबर है? याद नहीं सर, देखते हैं क्या आ गया। R5 तो था सर, लेकिन एप्पल वाला वो उसमें डाला था कि नहीं, याद नहीं। हाँ, ये आ गया, चलो Yes. ठीक है, बट दिस इज नॉट डायनामिक यार। और अगर मुझे अभी, चलो डायनामिक कैसे करेंगे, अभी क्या करूं बताओ। डायनामिक के लिए मैं फिल्टर फंक्शन यूज कर सकता हूँ। आई कैन यूज फिल्टर फंक्शन, ऐसे फिल्टर, देयर इज अ फंक्शन कॉल्ड फिल्टर फंक्शन इन ऑफिस 365। इज आस्किंग मी व्हाट इज द एरे, मतलब क्या चाहिए तुमको बाहर। आई से आई वांट द वैल्यूज फ्रॉम हियर टू, दिस इज व्हाट आई वांट। आई से ही इज आस्किंग मी ओके व्हाट हैज टू बी इंक्लूडेड। मुझे आउटपुट में क्या चाहिए, मुझे आउटपुट में ये चाहिए। मुझे बोलता है फ्रॉम दिस आउटपुट व्हाट यू वांट। I want anything where this product column, okay, this has to be this one. It should be this. It should match this one. Understands how the filter works? The very first criteria जो है वो बोलता है कि तेरे को बाहर क्या चाहिए। मैं बोलता है मेरे को पूरा टेबल बाहर चाहिए। Okay. Then is asking me, okay, fine. इसके अलावा from this entire table, which rows you want me to pull out? I say any rows from this column. Just look at that any of these rows matching this apple, take that row out. Okay, he's asking me that if not found, then what do you want me to do? I said, then don't show me anything. That's all. Or tell me no records. That's all. Let's see if I press enter what happens. No records. Apple नहीं है क्या? हाँ, यहाँ पे क्या है? Wild cards. Okay, well let's go for potato.
कैन यू दैट ट्रिक्स अंदर जाके करो आप, ठीक है। उधर जाके भी बताओ ना कि भाई K5 के आगे स्टार पीछे स्टार, समझा ना, तो वो एप्पल भी ले लेगा। So now this becomes dynamic. Potato लिया, I write pencil over here, so this is pencil हो गया, आ रहा है समझ में। 365 इसके लिए स्प्लिट कर रहा है वो सर बस इसमें करना पड़ेगा। डेट 365 फॉर्मेट will चेंज कर रहा है spill, ना, सॉरी, डेट फॉर्मेट चेंज कर रहा है ना, टेक्स्ट में कन्वर्ट कर रहा है उसको या नंबर में कन्वर्ट हाँ कर हाँ वो तो अपन को करना पड़ेगा ना भैया। और क्या था, पेंसिल था, पोटेटो था, और क्या था, इरेजर। इरेजर है क्या, मतलब इरेजर नहीं है। मिल्क। चलो समझ गया ना तुम्हें, डायनामिक यस सर। मिल्क। एंड वन मोर थिंग, ये जो है ना ये स्पिल्ड है। स्पिल्ड का मतलब क्या होता है कि देयर इज नो फंक्शंस इन दिस, ये पूरा एक इधर कुछ नहीं है। इफ यू ट्राई टू डिलीट दिस ना, इट विल नॉट गेट डिलीटेड, ओके, बिकॉज ये पूरा का पूरा इसमें लिखा हुआ है। ये पूरा फंक्शन एक ही सेल के अंदर ये पूरा स्पिल किया हुआ है। इट्स इन K10। और इसका फायदा पता है क्या है, इसका फायदा ये है कि इन फ्यूचर अगर मैंने कभी भी किधर भी यहां से भी K10 को बुलाया, इफ आई एम कॉलिंग K10 ऐसे, यू आर इक्वल टू K10 and if I press enter what will I get now? पूरा। No, I will get only one word जो भी K10 में है वो, ठीक है, you get this K10। बट इफ यू वांट द स्पिल्ड वन तो उसको बोलना पड़ेगा कि मेरे को पूरा K10 का स्पिल्ड चाहिए। तो ऐसे स्पिल्ड इन 365 इज रिकॉग्नाइज्ड बाय हैश की। जैसे ही मैंने हैश डाला आपको दिखाता हूं, देखो ऊपर देखो ऐसे इक्वल्स टू K10 एंड इफ आई टाइप हैश नाउ सी व्हाट विल हैपन, तो सिलेक्ट कर ले, तो समझ गया इसको ये पूरा चाहिए। सो इफ यू प्रेस एंटर अगेन इट विल बी स्पिल्ड ओवर हियर। ये बहुत फायदे हैं इसके आगे जाके। यू कैन यूज इन वैलिडेशंस के अंदर सब आप यूज कर सकते हो ना। डायनेमिक आपने खाली हैश लगा दिया तो जैसा ये चेंज होएगा उधर तुम्हारा वैलिडेशन चेंज होगा। ओके जिसके पास में नहीं है वो कैसे डायनामिक बनाएगा, थ्रू मैक्रोस। समझ में आया। अगर आपके पास में 365 नहीं है एंड इफ यू वांट टू मेक दिस डायनामिक देन व्हाट यू विल डू, आई विल यूज मैक्रोस। चलो मैक्रोस दिखाता हूँ कैसे यूज करता हूँ। आप लोगों को मैक्रोस पता है क्या? नहीं सर। क्या हाँ सब सो गए, नहीं नो सर सर। नहीं पता। जागे हो? यस सर। मैक्रोस बनाते हैं, चलो। मैक्रो क्या करता है, वॉट एवर यू डू मैक्रो इज गोइंग टू रिपीट दैट। याद रखना मैक्रो का काम यही होता है। अगर मैंने जाके all the new people who are actually listening to my recordings, I have to start for them also. I need to explain them what is macro. Macro is nothing but it is a recording. It's a monkey. Whatever you do, your mouse and keyboard events, whenever you start your recordings, and after that, if you click your mouse, if you click your keyboard button, press your keyboard buttons, then everything will be just recorded for you, so that next time when you play that macro, then automatically it will do the same thing what you did. बस ये concept समझ लो आप। इसका मतलब होता है कि अगर मैंने मैक्रो में जाके I go to view and I say a macro and I say record a macro. After that is asking me what is the name of the macro. I say it's my first macro. So you say first macro. Okay. Then he's asking me, do you want to give any shortcut keys for this macro? I say yes, control, and let me give control के साथ में control K. Okay. My first macro, so I say control M. Okay, macro. This macro will work in this workbook only, the entire workbook. You are in any sheet, this macro will work in your workbook, right? If you go to your personal macro workbook, then it will apply in all your workbooks because all the macros are stored in personal macro workbook. तो फिलहाल मेरे को इस मैक्रो यही वर्कबुक में चलाने का है, तो आई जस्ट गो टू दिस वर्कबुक। जैसे ही मैं इसको ओके बोलता हूँ, द मोमेंट आई से ओके, यू विल फाइंड नेक्स्ट टू योर प्रैक्टिस डेटा नीचे रेडी लिखा हुआ है, रेडी। बॉटम में यू कैन जस्ट सी बॉटम लेफ्ट कॉर्नर देयर इज रेडी। रेडी के बाजू में यू विल सी अ स्क्वायर स्टॉप बटन वेयर मैक्रो इज बीन रिकॉर्डेड एंड नाउ यू कैन जस्ट स्टॉप। जैसे मैं ओके करता हूँ, यू विल सी अ स्टॉप बटन नेक्स्ट टू रेडी आ गया उधर, ठीक है। इट मींस अभी आपका मैक्रो चालू है। अभी आप जो भी कुछ करोगे ना वो मैक्रो रिकॉर्डिंग कर लेगा। से फॉर एग्जांपल आई गो टू होम, आई गो टू let's say I'm not clicking anywhere, क्लिक करोगे तो रिकॉर्ड होगा। मैंने अभी होम में गया, दिस इज रिकॉर्डेड। फिर मैं जाता हूँ जनरल में और मैं बोलता हूँ एक काम करो, मेक इट करेंसी एंड देन मेक इट बोल्ड एंड देन मेक इट रेन दो। मैंने इसको सिलेक्ट नहीं किया ना, इसके लिए पहले जहां पे पड़ा था पड़ा रेन दो, तो ऐसे मेक इट लिटिल डार्क ग्रीन, ओके, एंड दैट्स ऑल। दिस इज व्हाट आई वांट एंड आई if I want to change the background color also I can just say give me fill with the light green text,
Okay, इतना करने के बाद I will stop my recording by just going into view, or either I can just click over here also and say stop, तो भी stop हो जाएगा, या फिर view में जाता हूं मैं, I go to macro and I say please stop the recording. Be careful, any extra event will be captured. Please don't do that. ये बहुत गड़बड़ का काम कर सकता है. You have to be very careful here. तो अब मैंने जो भी किया ना, I haven't selected any cells. अभी फायदा क्या होगा ना उसका? इसका फायदा ये होगा कि if I select this much and if I press Control M, you will see that macro is doing all my stuff. Whatever I did, he did for me. आ रहा है समझ में? Because I did currency symbol. अब मैं इसको सिलेक्ट करता हूं, अब इसको तो currency नहीं कर सकता है, but still he will do everything else except the currencies. I hope I am audible Yes, sir. Yes, sir. and also understandable. Yes, sir. Okay, so ये हो गया मैक्रो का काम. अब यही चीज what do I do? अब इसको मैक्रो कैसे कन्वर्ट करूं? My things what I wanted over here, इसको मैं कैसे कन्वर्ट करता हूं? So this is formatted. So again I select everything. This. Sorry. यहाँ पे यहाँ no fill ऐसा था, वैसे ही कर देता हूँ. Control A, no fill. This date should be in date format. That's all. Now अभी देखना, यही चीज जो मैंने किया अभी, I will make it little dynamic for you. I want कि whenever I type the criteria over here and I press my shortcut key, my data should come over here. Correct? So what do I do now? I go to view. I go to macro. I said record a macro. This time is my macro 2, or I say it's my filter macro. The shortcut key is this time F. Control F नहीं करता हूँ. It's for find. So I'll go for Control L. चलो, let's see, because I'm not going to use anymore. But ठीक है, L डाला है मैंने. I say okay. जैसे okay करूँगा, macro will start. Now macro will follow you. If you click anywhere, he will also click for you. So आपको क्या करने का है? ऐसे do one thing. Don't click anywhere. Yeah, click, because याद रखना पड़ेगा. अगर आपका डेटा के अंदर नहीं है, तो it will not select your things. So I want कि तू सबसे पहले डेटा के अंदर घुस जाना. Okay, and then go to data, go to advanced filter. From here, say copy to, is asking me what you want to copy, what is your list range. I say my list range is from this to this one. This is my table 3. Okay, what is your criteria? I say my criteria is, let's say from name, I'll give 2 here. Let me give 2 criterias over here. Okay, and then what copy to is asking me, I say copy to over here. Okay, and I say okay. You got the complete data, and now I will stop my recording because I don't need anything more. I just stop the recording. Okay? Now suppose you don't have anything over here, and I will type here Italy. Okay, and wherever I am, I just type here Italy and I press Control L. Let's see what happens. You got Italy आना चाहिए था ना? क्यों नहीं आया? सब आ गया. क्यों भाई? क्या गड़बड़ किया? लोकेशन ठीक लिखा है. प्रोडक्ट शुगर कंट्रोल L. सब प्रोडक्ट आ रहे हैं. पता क्यों आ रहे हैं? Because of double range. I think double range के कारण आ रहा है. Let me do that. Let me go into my VBA code. वो अंदर से उसने कोड लिखा हुआ है, तो you can always rectify that. It's from then Control L. देखिए तो बराबर किया था. Control J5 to नहीं, क्राइटेरिया होना चाहिए. इसका नाम क्राइटेरिया है. ये उसने क्राइटेरिया नहीं लिया ना, उसने कुछ अलग ही नेम ऑफ क्राइटेरिया.
इसमें क्राइटेरिया डायरेक्ट नहीं दे सकता, रेंज का नाम है वो, ओके वो अलग ही कर देगा बिकॉज इट्स नॉट अ नेम. I will go to formulas, I will go to name manager and I will remove this criteria. It's J5 to P6 ठीक है इसकी वजह से, और यहाँ वहाँ पे P7 हो गया है, दोनों मिसमैच कर रहा है. So I will remove this criteria, okay, and we'll remove this macro again. I go to V macro and I will remove this my filter, delete this macro. Let me try one more time. What happened was the name was automatically given. ये नाम अपने आप दे देता है वो criteria. So earlier when we had given this name, it was criteria. So let's do one more time. I go to view, I say macro, I say start the recording, record a new macro. This time it's macro 3. I say no, it's my filter. Control L, fine. I say okay. What you want to do? I say click inside the data, go to advanced filters, copy to. This time it's table. Table ले लिया मैंने पूरा. He's asking me what is the criteria. I say criteria is this one. Okay. Okay. Then copy to over here. Okay. Stop the recording. Fine, let me check now. Location is Italy. Press enter and press Control L. Oh, ये वाला शॉर्ट, ये कौन सा? अरे Control L. ये कौन सा वाला चल रहा है अंदर? मैक्रो डिलीट नहीं हुआ क्या? क्या बोल रहे हो? बराबर है. J5 to अच्छा O6 ही लिया है ना, ठीक है ना? मम्मी नवीन सर का फोन है, उन्होंने कहा था तबीयत ठीक नहीं है, शायद कल ना आए, सो गया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा. जल्दी कट गया. बैक कॉल कर दो. हम लोग जाएंगे नहीं आज? करवा दो. आप लोग को नींद तो नहीं आ रही है ना? नो सर. नो सर. देखो कभी कभी होता है. ओके अपन ऐसा 1000 बार मैंने किया है. ओके डोंट वरी, अगेन आई विल डू दैट. होना तो नहीं चाहिए. लेट मी चेक दिस वन मोर टाइम, लास्ट टाइम. क्या होता है ना, कभी कभी फाइल भी है ना पुराना पड़ा रहता है. ओके आई विल शेयर इट अगेन. फाइल है उधर. Okay, let me check whether I have any macros here pending. Okay, I don't have any macros. चलो एक बार और बनाते हैं लास्ट में. Name, product, location, sales पूरा लेता हूँ मैं. I keep it over here. And table बना हुआ है. ठीक है. Go to view, go to macro, record macros. I'll write macro 4 only this time. The shortcut key, I will not give any shortcut key. I'll tell you why. I say okay, no shortcut keys here. I say okay. Macro is started. I say click inside the data, go to my data tab, advanced filters, copy to list range is from date to sales, that is table 3. Criteria is from K1 to Q2. Okay, and copy to over here. I say okay and stop the recording. Let's see. Department B, go to view, go to macros. This time run the macro. क्या दिखा रहा है इधर? कुछ तो गड़बड़ है. आई थिंक आना ही चाहिए था ना यार. नो दिस इज चैलेंज. We have done this, I think not less than 500 times in different complex worksheets also. कोई जाएगा नहीं. Do we have Excel practice data? Okay, यहाँ पे आता हूँ. This is a clean sheet. ठीक है. Okay, I'm trying on this one now. Last time. We'll see.
कॉपी कर देता हूँ. Okay, go to data advanced, copy to this range, this criteria, this to this, paste it over here. Okay, and stop recording. अब नहीं होएगा ना, अब उसके घर पे जाने का सीधा सब लोग, सब घर पे बैठे वैसे तो होना ही चाहिए. So let me go for department B. Do I have B? Okay, I have B. I press control क्या था? P. I got this. So when I press control P, I got this. क्योंकि फाइल में प्रॉब्लम रहता है. Let me go for control. Let me go for C department. See, now what happened is C department पे आ गया, but the earlier one is not cleared. उसने इसको clear नहीं किया. You're getting me? So usually what I do, how will I make the macro? This is final time बताऊंगा मैं आपको. एक step जानबूझ के मैंने नहीं किया था. That's for clearing the data. Okay. Filter function को जरूरत नहीं पड़ती है. Filter function is very clever. It will automatically do it for you. But ये ऐसा नहीं करता है. How? See what I should do now. This macro. Let's delete this one. Okay. Now record a macro 6. No shortcut key. I say okay. First step, I'll say do one thing. Just clear my range. You have to select it randomly. मैंने ऐसा किया हुआ. So what he will do, he will just clear my range here, whatever is there. Come inside the data. Go to data. Go to advanced filters. Copy my table, which is over here to here. Then criteria range, I think is done. बराबर है. From here to here. And copy to over, say here. So okay. And then stop the map. Now what will happen? It will automatically clear the data. Suppose if I type B and if I press, अभी वहाँ पे shortcut key नहीं दिया मैं. So what I will do now? I have not given the shortcut key, but I will create a button small. So again and again I have to go there. So what I will do? Illustrations. I'll take a small button. I can use any of the buttons. I can something like this. Okay, and let me give a big. Sorry. हाँ यहाँ डाल. यहाँ तो मैं लिखने वाला हूँ, ठीक है. I can keep it here also. चलो ना कहाँ भी रखो. So if I type here B and now I right click on this button, I say assign the macro, which is macro 6. I say okay. So now this button has been assigned over here. So if I type here B and if I click here, you will see that this is reflected over here. I'll remove the B from here. I say give me only Italy people and just click on this button. You will see that the data has been, यहाँ पे क्या है, already it is there like this in table format. That is why it is showing me this. Otherwise वो नहीं दिखा था. You remove this, you click on again this button, you get entire data. So you have a little flicker because all the steps he's actually doing it for you. Cleaning the area first, going inside, taking the things, and the macro works in this way. Yes. समझ में आ रहा है? Yes, sir. So you can try this. I'll give you one more assignment so that day after tomorrow when you come. What if I want only 3 fields? I don't want everything. I will type your location, but here I want is here I want only the name and the sales. Yeah. From this I want to pull only name and sales. That's all. या फिर name, दो ही चीज मेरे को उठाने का और यहाँ पे डालने का. तो पूरा लेके आ रहा है ना वो. So only 2 columns or I just want 3 columns to be pulled out. What can be done? So homework. And also one more homework. What if I type here Apple? ये तो तुमको बताया था. ओके, ये तो हो गया. डायनामिक में तो एप्पल की जगह पे आई विल राइट इट समवेयर एल्स, स्टार करके कर सकते हो. ओके गाइस, सो वी फिनिश विद मैक्रोस, हाउ टू यूज मैक्रोस. सर वो VBA फंक्शन जो आपने किया वो कैसे लाया था? व्हिच फंक्शन? अभी आपने वो VBA का. दैट इज नॉट अ फंक्शन, दैट इज अ बैकग्राउंड VBA स्क्रिप्ट. हाँ, VBA का. जस्ट प्रेस Alt F11, you will get the VBA script. Alt F11. Alt F11, it will take you to the modules.
You can write your own custom codes over there, but for that you need to know VBA. Okay, guys.